There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, I can do.
transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture... Why am I playing this game? Sky. Oh, experts. Hello, expert. Mother. हट यार क्या हुआ? और नॉक हो गया डेड हो गया बट मेरी लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दे. किस चीज की कर रहा है Getting over it. कर तू देखना. चल बे मेरे लाइक तो कर दे यार. देखता है हाँ मत. लाइक तो कर दे कर दी. यार मेरे को यार पार्टनर चाहिए कोई पबजी लाइट के लिए. अरे मैं आया था पबजी लाइट में, मेरी क्रैश हो गई, फिर मैं इसमें आ गया. अरे पबजी पीसी लाइट. आप इसी लाइट की बात कर रहा हूँ. आजा यार खेलते हैं. बड़ी अभी तो गेटिंग ओवर इट कंप्लीट करूंगा जितना टाइम है. कंप्लीट करेगा बेटे कभी नहीं होगी जिंदगी में. बड़ी मैं कर चुका हूँ आगे भी. यार भाई एनीवन पबजी पीसी प्लीज. मेरी लाइव देखने में कितना आगे पहुंच गया हूँ. बस इधर मैं ऑरेंज हेल तक बड़े आराम से पहुंच जाऊँ बिना रेंज करे, बट उसके आगे ना मेरी माँ चुदेगी. भाई कोई नहीं है भाई खेलने वाला तू तो आ ले. अल्लाह ताला मेरे. उफ उप्स उप्सी उप्स. नहीं मैं गांडू जो खेल रहा हूँ इस गेम को, पता नहीं क्यों. सेंसी बढ़ा दी मैंने. अभी मैं बकचोदी करूंगा इधर. तो भाई मैं तो डुओस फिल करके चलता हूँ. मेरे को तो बंदे ही बिना माइक के मिलते हैं. मेरे को मिला था माइक वाला, बट मेरा गेम ही क्रैश हो गया. मगर हाँ जो गेम स्मूथ चल रही है ना पबजी भाई. पबजी ऑप्टिमाइज्ड है बड़ी. तो वैसे भी उसका नाम ही लाइट है तो लाइट हो गई. हाय बड़ी मंदी गोयल, वेलकम टू द स्ट्रीम बड़ी. ओए मैं इंस्टा पेज का शाउट आउट दे दे भाई.
बड़ी सब दे दूंगा पहले। गुड गोइंग। बड़ी इंग्लिश मेरे को आती नहीं और इतनी अच्छी इंग्लिश में बोल नहीं लेता। experts.fm इंस्टाग्राम बस यही बोल। मादर होना शुरू हो गया रेज। बड़ी पहले कर लेता था मैं, जब से फोर्टनाइट खेलना चालू किया ना। फोर्टनाइट के पहले मैं इसमें था, तब से नहीं। और ये फ्री गेम थोड़ी ना, गेटिंग ओवर इट। तो पेड है। तूने पे किया? नो। तो मिली कैसे? तो बड़ी कुछ वेबसाइट्स होती हैं। चल बे, तूने वेबसाइट पे कैसे कर लिया? वो तो स्टीम पे है 300 रुपए की। मादर तेरे को लिंक दे दूंगा। किधर जाना चाहिए? लेट्स गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आ जाओ यार, जॉर्ज पूल पे जाना सबको, आ जाओ। मादर तू जॉर्जपुर पे जा और मैं वॉइस ओवर करूं पहले तो इसका। मेरे से खेला ही नहीं जा रहा इतना। इजेक्ट हो जा, इजेक्टेड बाय द यार मैं करूंगा रेज, मैं करूंगा। एक तो इतनी ठंडो रखी है, माउस घूम नहीं रहा, मुट्ठ मार के आना पड़ रहा है। क्रैक्सल हाय हाय, कैसा है क्रैक्सल? और बता क्रैक्सल क्या हाल चल रहे हैं तेरे? परफेक्ट ड्रॉप, नाइस। कल मैं पूरा दिन लड़। ऊप्स, मैंने कर लिया। नाइस। ए मादर तो नहीं नहीं, बच गया मेरा प्लेयर कर। ये यू कुड फॉलो बेसबॉल बैट, मतलब कैसी कैसी बातें करता है ना इस गेम का वॉइस ओवर। यू कुड फॉलो बेसबॉल बैट, नहीं क्यों करूंगा मैं फॉलो। फाइनली भाई हेलमेट मिला मेरे को। यार मरना नहीं तो वाह व्हाट। बस ऑरेंज है बाबा जी, कंप्लेंट करवा देना। मेरे को पता लगा, मेरे को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। मैंने ये उल्टा डाल दिया, ये हुई ना बात। अब खेला जाएगा। बचावे ये मादर चुदगिर। यार आ जाना यहाँ पे, पबजी आ जा यार, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे मैं ऑरेंज हेल्थ कर आया हूँ, कर ले तू देखना। बाद में देखो ना फ्री टाइम। ऑरेंज हेल्थ कर ली मैंने पहली बार में कंप्लीट। ओ बेंचो तो अंगूठे पे मेरे को लग रहा है मैं कर लूंगा आज ही कंप्लीट। मादर खुद गई मेरी, बड़े आराम से, अच्छे से खुद ही है। तो देखेगा मैं ऑरेंज हेल्थ से पूरा नीचे आया हूँ। नहीं यार मेरे को गुस्सा आ गया। It's
इससे अच्छा मैं न्यू गेम लगाऊं बड़ी। भाई आई एम लिविंग फोर्टनाइट भाई, आई लाइक पबजी। पबजी सच में? शिट 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 शिट, एक नॉक। माय गॉड, मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। चुप को फेंको बैठ के, चुप चुप बैंडेज डाल अंदर, इसे डाल M416 स्कार की जगह डाल दे, बस सही है। मैं किसी का टट्टा हूँ जो आज बन गया हूँ, अब जे मेरा सपना है सच कि में बन गया है। सही है भाई। ये मादर चोद। इसमें अप्लाई कुछ पलटी है। Knock one. Back with some more for temperatures. Nice. मादर, मैं दोबारा डायमंड चिमनी पे पहुंच गया। Oh shit. Oh fuck, मैं दोबारा नीचे गिर गया। Teammate is dead. और अकेले बॉट मर गया ना। और अब रो रहा। इसका वॉइस ओवर सुनने में मजा आता है मेरे को। Knock. क्यों नॉक करता जा? पेन किलर, फर्स्ट एड, सप्रेसर लगा दो। ACP नहीं चाहिए। Nice, got him, GG. पबजी इतनी इजी है और तू फोर्टनाइट को छोड़ रहे है। चल तेरे पे है, मैं बन जाऊंगा फोर्टनाइट का प्रो। बस शायद छोड़ो, कंफर्म नहीं है। कंफर्म करना।
फिर मैं बोल दूं अपने क्लाइंट में आई एम द प्रो प्लेयर ऑफ दिस क्लाइंट। मैं डेविल चिमनी पे आके ना मेरे को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, फिर मैं लंड पकड़ लेता हूँ लोगों का। ऐसे गलत बोल गया मैं। नहीं नहीं, बचा पता कैसे हुआ मेरा? मादर चोद जो इसमें खेलने के लिए आया। चुप कर। चुदा नहीं आज तू चढ़ेगा तू। चैनल पे जाके लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं मार दूंगा सोने। Oh my god, speedrun detected. स्पीडरन डिटेक्ट भी करवाया और फिर ये करवाया। So guys, that's it for me. बाकी का कल खेलते हैं इस गेम को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी लाइव बंद कर रहा हूँ।